So today I want to tell all of you the hard truth about answer writing for beginners. I'm sure many of you are aware of this, many of you are dealing with this. And this is the mindset that really differentiates the output, the practice, the preparation of a topper and a fresher and a beginner and someone who never really makes it. The reality is that 5 lakh aspirants appeared for Prelims 2025, of which only 15,000 ever wrote mains. Now what happens? Many people think that oh, this number indicates कि prelims is the big eliminator. Prelims बहुत challenging है, prelims पे focus कर लो, prelims निकलना चाहिए is the biggest problem. But what they don't realize is that in the mains hall, they are comparing with the top 2.5%. They are comparing with those people who have mastered GS, who are at the top of their game. These are the top 2.5% of UPSC preparation that you are dealing with. And mains is the real game. Mains is the real fight. यहाँ से रैंक निकलती है, यहाँ से सिलेक्शन निकलती है, यहीं से डिसाइड होगा कि आपको आगे क्या होना है. आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ द साइकिल और आर यू गोइंग टू स्टे विद इन दिस साइकिल एंड परहैप्स इवन गेट आउट ऑफ द रेस. मेंस के अंदर द ओनली थिंग इज आंसर राइटिंग दैट मैटर्स. योर वेपन इज योर पेन एंड योर in mains the only thing that matters is answer writing. Here the weapon is the pen and the skill is writing the right answers. Now in this video, within the next 5 minutes, I want to compare how a topper writes versus how a fresher writes. What is it that sets the topper apart? Because let me tell you, you will very soon find out that toppers have a secret sauce, something that freshers fail to understand before it's too late. So watch this video for the next 5 minutes. Everything will be clear to you. So firstly, what are the struggles that beginners face? एक तो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं होगी. दे फेल टू रियलाइज दैट आंसर राइटिंग इज सपोज टू बी पैरेलल with your syllabus completion, because if you wait to complete the syllabus you will never be able to start writing answers, and others who are gaining an edge, they are already writing. See, आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं करनी चाहिए, मैं उस फोमो में आपको नहीं लेके आऊंगा, लेकिन आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट होने का भी वेट नहीं करना चाहिए. आपने बेसिक्स पढ़ लिए, आपने एक बार अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत पढ़ ली, आप जिस कोचिंग में आपकी फाउंडेशन की कुछ क्लासेस हो गई हैं, आपकी बेसिक कुछ क्लासेस हो गई हैं, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. स्टार्ट विद इजी आंसर्स. अ गुड फाउंडेशन कोर्स विल इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ आंसर्स. सीधा आपको पीवाईक्यू से लिखने की जरूरत नहीं है, but keep getting that practice of writing. Then the problem is beginners know the content but they don't know how to write it. When we compare a topper's answer to a beginner's answer, I have done this in this video. AIR 255 Ankit Raushan, who is going to teach you answer writing frameworks on the 3rd of July. I have his answer copies and I've compared his answer copy to that of a beginner. You will see content कहीं ना कहीं सेम ही है, बात सेम ही हो रही है. अब टॉपर के पास कोई एक्स्ट्रा ज्ञान तो कहीं से आ नहीं रहा है, वो भी तो वही चीज लिख रहे हैं जो लक्ष्मीकांत में है, वो भी तो वही लिख रहे हैं जो उन्होंने एआई से या कहीं ऑनलाइन सोर्स या किसी कोचिंग मटेरियल से पढ़ा है. बट वाई आर दे गेनिंग एन एज, वाई आर दे गेटिंग सिलेक्टेड? इट्स वेरी साइंटिफिक आंसर राइटिंग. टॉपर्स जो है वो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हैं, वो अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं, समथिंग दैट बिगिनर्स स्ट्रगल विद. ओके, सो व्हाट इज द सीक्रेट सॉस ऑफ द टॉपर्स? टॉपर्स की सीक्रेट सॉस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट फ्रेमवर्क्स. वाई फ्रेमवर्क्स? क्योंकि 3 घंटे के उस हाई इंटेंस प्रेशर मेंस एनवायरनमेंट में यू कैन नॉट सिट एंड डिसाइड कि ये आंसर कैसे होगा, ये आंसर कैसे होगा. अगर आप सोचने बैठ गए तो आप रह गए. तो इसीलिए फ्रेमवर्क्स डेवलप करो. अंकित रोशन AIR 255 हैज डेवलप्ड 5 सच फ्रेमवर्क्स दैट ही विल शेयर विद यू on the 3rd of July, and you need to practice those frameworks. You need to एनग्रेन दोज फ्रेमवर्क्स इन द सेंस कि वो ऑर्गेनिकली रिफ्लेक्स रिएक्शन होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन तो चलो इस फ्रेमवर्क में फिट कर देते हैं, क्योंकि 7 मिनट है एक आंसर लिखने के लिए. तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है. नाउ लेट अस क्विकली कंपेयर अ टॉपर्स आंसर, अंकित रोशन's आंसर्स वर्सेस द आंसर ऑफ अ बिगिनर. सेम क्वेश्चन है दोनों के लिए. हाउ हैज रैपिड अर्बनाइजेशन अफेक्टेड द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ पेरी अर्बन रीजन्स इन इंडिया? सेम क्वेश्चन. आई हैव फाउंड अ बिगिनर्स आंसर and I took Ankit Roshan's answer copy, and we need to see कि दोनों में क्या difference है. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल है, पेरी अर्बन सुन के काफी लोग घबरा जाएंगे, क्या करें बिगिनर। चलो सारी इंफॉर्मेशन एक बड़े से पैराग्राफ में उड़ेल देता हूँ। कोई एग्जामिनर है, वो इतनी कॉपीज चेक कर रहा है, 50 कॉपी चेक कर रहा है, दिन की 30 कॉपी चेक कर रहा है, इतना बड़ा देख करके ही कट, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, क्या इंफॉर्मेशन है। मतलब ऑनेस्टली इसको देख करके आई एम श्योर यू गाइस विल आल्सो रियलाइज नो वन वांट्स टू रीड दिस ह्यूज चंक versus the topper Ankit Roshan. On the other hand, Ankit sir, what has he done? He has created a very simple diagram. He has given value enrichment. He has explained the topic. Space भी अच्छे से यूज हो रहा है, because इतना content अगर नहीं है किसी question पे, you can use that space by making a diagram. Make your answer copy neat, make your answer copy clean. Peri-urban connected with transport to urban area. सब समझ में आ गया इस एक simple diagram से. Very good. Next line is urbanization has impacted socio-cultural landscape of peri-urban areas in the following way, directly hitting the demand of the question. Whereas this beginner, what have they written? Why peri-urban matters for socio-cultural landscape? मतलब ठीक है, बॉक्स बना दिया यहाँ पे, हैशटैग बना दिया यहाँ पे, बट क्या है, क्या मिसिंग है यहाँ पे? लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, demand of the question is not addressed. This is not how you can get marks. This is not how you get marks. Okay, coming to the body, economic lifestyle, first point, very clear, very simple. On the other hand, we have social stratification and inequality. Trying to make the answer technical, trying to show off knowledge. Okay, that is a good approach. Keywords are necessary, but जब simply you can just say economic aspect क्या है, ठीक है, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, जो पूछा गया है वो लिखो ना. वाई आर यू गोइंग इन टू कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज? लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस कॉपी. यहाँ पे क्या है, प्रोटीन इंटेंस क्रॉप कल्टिवेशन, एग्जाम्पल सोयाबीन पल्सेस एज डिमांड ऑफ प्रोटीन इज राइजिंग. सिंपली इस पॉइंट को विद एग्जाम्पल विद अ क्लियर हेडिंग, व्हाट अंकित रोशन हैज एक्सप्लेन्ड, that in peri-urban areas protein cultivation is increasing, protein crops are increasing like soybean pulses. अब same content has been tried to, the beginner has tried to give the same content by saying loss of agrarian traditions. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है. फेस्टिवल्स की बात हो गई है, कस्टम्स की बात हो गई है, लेकिन क्लियर एग्जाम्पल, क्लियर हेडिंग इज नॉट देयर. Okay, now let's look at another question. Vesara style of temple architecture, how is it a synthesis of Nagara and Dravida? Within this question, what Ankit sir has done for you all, I mean in his answer copy what he has done, in the beginning he has given Vesara means pony or hybrid, Nagara Dravid का amalgamation है, ये चालुक्यास ऑफ बादामी राष्ट्रकूटास नौसल्यास में देखा गया है. इंट्रो में ही यू आर एड्रेसिंग द डिमांड, वेरी क्रूशियल. The beginner or someone who does not have an answer writing framework, someone who does not have answer writing practice but has knowledge, what will they do? They will give you a big introduction, is a mix of Indian styles that combines Dravida, Nagara, blended, especially temples built by Chalukyas, Hausalyas, particularly in Karnataka. Well, all of this information is not wrong. It is not at all wrong, but it is not needed. यहाँ पे देखो, origin की बात यहाँ पे हो रही है. It is an interesting fact. This is an eye-catchy fact. This can get you marks. But ये यहाँ पे आ रहा है. Something that a topper with the right framework will put in the beginning. Then art and culture question. Everyone knows mapping is very important. Maps are very important. This person has not drawn a map. Whereas someone who has scored, who has made a good rank, who has gotten a good rank, how have they done this? नहीं आता है मैप बनाना, सिंपल ट्रेपीजियम मैप बना दो. ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट दिखा सकते हो, यहाँ पे आप अपना गुजरात कोस्ट दिखा सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर से अपना कश्मीर का रीजन बना सकते हो. सिंपल मैप बनाओ. यू डोंट हैव टू मेक इट वेरी आर्टिस्टिक, यू डोंट हैव दैट मच टाइम. मैप प्रेपरेशन में क्या प्रैक्टिस करो, ना ही इन योर एग्जाम हॉल क्या अच्छा मैप बनाओ. इन दिस पेपर मैप इज मिसिंग. इन दिस पेपर देर इज अ मैप. अगेन वैल्यू इनरिचमेंट हो रही है आंसर में, स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है. And all of this doesn't come automatically. See, I can give you all of this information, but it will not come automatically to you until and unless you make a framework and you practice it repeatedly. So if you want to learn such frameworks, on the 3rd of July, via online workshop, via online mode, we will have AIR 255 Ankit Roshan joining us,
who will conduct an answer writing workshop for beginners. Very importantly, he will teach you 5 answer writing frameworks. Now, as you know, at LevelUp IAS, this is not going to be a passive workshop. It is going to be very intense. Okay, there will be live exercises, live brainstorming, where Ankit sir will sit with all of you. He will make you write, he will make you think, he will make you apply all of these frameworks that he will teach you. Plus, every participant will also get a free worksheet, एंड इट इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली वर्कशॉप. वी हैव डिजाइंड इट इन अ वे कि आपके पास चाहे बेसिक कंटेंट भी है, चाहे अभी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, योर टारगेट इज 2027 20 and beyond, you can join this workshop, and from the very first phase of your preparation you can learn the right frameworks. So there is the link for this workshop. Registrations is given below, so please register and hope to see you there on the 3rd of July. Thank you.